but they are in evening. So it's evening. So, are you talking, Kenneth? I'm talking to you. It's evening for them. Oh, well, good evening for them. It's morning for me. Yes, so it's very morning for me. And up per salamti ho. Let's do it in that way. All right, so today we're going to continue working on the alphabet, adding more detail. आज हम दोबारा जो हैं जो अल्फाबेट्स को सीखेंगे और उसके अंदर जो मजीद तफसीलात हैं उनको देखेंगे. And next week we begin, we move on to actual grammar. और अगला वीक जो है उसमें हम ग्रामर को शुरू करेंगे और आप सबसे इल्तमास है इस वीक के अंदर आपने सारा जो पीछे सीखा है उसको खत्म करें. Now, the things we'll talk about today are, it's a lot of little details, and if you, it can overwhelm you if you let it. और ये जो आज जो है ये बहुत ज्यादा तफसील है जो हम सीखेंगे और आपने इसको बहुत ज्यादा ध्यान से जो है वो सीखना है. But I wrote the chapter so that you can have reference to it as we move on through the course. और मैंने इसलिए जो है एक इसके मुतालिक एक चैप्टर लिखा है ताकि आपको जो है वो सारा जिसके अंदर जो फर्क है वो पता लगे. So we have to learn this material, but we can be patient in our learning of it. और हमने ये सारा मटेरियल जो है इसको सीखना है और हमने बड़े सब्र के साथ इसको सीखना है. Now, before we start, we're going to take a quiz. You got to give me the last letters of the alphabet, the letters we worked on last week. और आपको पता है कि हम शुरू करें इससे पहले हमने जो पिछले हफ्ते जो अल्फाबेट्स का सीखे थे उसका जो है वो क्विज जो है वो देना है. So let's take 5 minutes and you write that out. और आपके पास 5 मिनट है और 5 मिनटों के अंदर आप वो तमाम जो अल्फाबेट्स है वो लिखें. Okay, so some of this will be review, but most of it will be new details. आज जो डिटेल हम देख रहे हैं अल्फाबेट्स की उसमें से कुछ जो है वो तो पुरानी होगी लेकिन ज्यादातर जो है वो नई है. You have this chapter, and in this chart I give the names of the letters as they're written in Hebrew and Aramaic. This is the Hebrew Aramaic names for the Hebrew alphabet, Hebrew Aramaic alphabet. और आपके सामने जो ये चार्ट है इसके अंदर जो है मैंने जो अल्फाबेट है उसके सामने का जो नाम है वो हिब्रू और हिब्रू अरामिक के अंदर लिखा हुआ है. So Aleph, Bet, Gimel. और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलिफ बेत एंड गैमल. And we went over this in detail for the last 3 weeks. So we're not going to go over it again. और हम पिछले 3 हफ्तों से यही सीख रहे हैं और आप सबको ये आता है और मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करता. But now let's go over some of those details. Let's talk about the dagesh. और लेकिन आए हम कुछ जो और डिटेल्स जो हैं वो देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं दागिश के बारे में. Now, here's a dagesh in this word, that dot in the middle of that letter. उर्दू में जिसको हम नुक्ता कहते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो एक छोटा सा नुक्ता है इसको दागिश कहते हैं. Now, if it's just a dot, it wouldn't require much discussion. But the dagesh actually has 2 different functions, and that's what we need to talk about. और अगर सिर्फ एक नुक्ता होता
तो हमें कुछ चीजों के बारे में हम इसको सिर्फ इतना ज्यादा तफसील से ना देखते, लेकिन जो दागिश है उसके दो बहुत बड़े जो हैं वो फंक्शंस हैं जिसको सीखना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। All right, and we give the dagesh two different names depending on the job it's doing. और दागिश के जो दो नाम दिए हैं वो इस वजह से कि वो क्या किरदार अदा करता है। The first one in Hebrew is called dagesh kal, and it means light dagesh. और जो पहला है हिब्रू में उसको कहते हैं दागिश काल, और इंग्लिश में हम इसको लाइट दागिश के नाम से जानते हैं। But since we've been doing grammar of Hebrew and Aramaic and Greek since, for the last 1,000 years, a lot of our terminology is actually in Latin. और क्योंकि हम ये जो सीख रहे हैं पिछले 1000 साल से, तो इसके अंदर जो हम टर्मिनोलॉजी ज्यादातर जानेंगे या देखेंगे वो लैटिन के अंदर है, लातीनी जुबान के अंदर है। And when it comes to Hebrew and Aramaic in particular, there's several Latin terms. For example, the dagesh kal is called the dagesh lene. और जैसे कि अब्रानी में तो हम इसको दागिश काल कहते हैं, लेकिन जब इसको हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो फिर इसको दागिश काल के तौर पर नहीं बल्कि हमेशा इसको दागिश लेने कहेंगे। And lene is just Latin for gentle. और जो लेने है इसका मतलब जो है वो मुलायम या जेंटल है। Now this dagesh is the one that we have been talking about all along. और ये वो दागिश है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। It only shows up in these 6 letters. और वो सिर्फ और सिर्फ ये जो सामने आपके सामने 6 जो वो लिखे हुए लेटर्स लिखे हुए हैं उसके अंदर जो है इस्तेमाल होता है। And to make it easier to remember those 6 letters, we made up a word with those 6 letters, begad kafat. और अगर हम ये देखें कि हम इन 6 लेटर्स को किस तरीके से याद रखें, तो इसको याद रखने के लिए हमने ऐसे किया कि इसको इकट्ठा लिखा और इसको बोला, तो ये बनता है begad kafat. And those aren't real words. It's just a nonsense word to help us remember these letters. और ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक नॉनसेंस लफ्ज बनाया गया है ताकि हमें याद रहे कि कौन से 6 लेटर्स की हम बात कर रहे हैं। Now, and we talked about this, so I'm going to review a little bit. These 6 letters can get a dagesh which hardens pronunciation, like in this bay, or it cannot have the dagesh, like this pay, and that aspirates or softens the pronunciation. और जब भी इसके अंदर दागिश आएगा जैसे बेद के अंदर है, तो तब जो है इसकी जो आवाज है वो वो सख्त होगी, लेकिन उसके बरक्स जब दागिश नहीं होगा तो जब हम पे बोलेंगे तो उसके पीछे जो है हम फूंक मारेंगे, तो जैसे ये है पे की आवाज देगा। Now, I use this term aspirated, that's this word right here. And all that means is to blow across the letter as you say it. और जो इसका ये जो टर्म मैंने लिखी है एस्पिरेटेड, इसका सिर्फ एक मतलब है और वो ये है कि जब आप लेटर को बोले तो उसके साथ या उसके पीछे आप जो है फूंक मारे। So for example, with the kaf, this letter, और मिसाल के तौर पे ये जो लेटर है नीचे काफ, without the dagesh, we blow across it as we say it, and it becomes kha. जब इसके अंदर दागिश नहीं होगा तो फिर हम इसको काफ में बल्कि की आवाज निकालेंगे। Now, we talked about this for the last 3 weeks. और आपको पता है कि इसके बारे में हमें पिछले 3 वीक के अंदर सीखा। And so what I want to give you today is the rule for when you have that dagesh lene and when do you not. लेकिन आज हम ये एक रूल सीखेंगे कि कब जो है वो दागिश लेने है या नहीं।
The rule. Hi, sir. Yeah. Excuse me. My screen is going out of the screen. Can you small it Okay. Can you zoom out, little please, bit? Dr. Yeah, Vance? zoom out. Yeah, thank you. Yeah, I know. Okay, I did that on purpose so they could see the part I'm doing, but I'll shrink it. Yeah, it's going out of my screen. Yeah, thank you. Okay, can everybody else still see it, kid? Yeah. Rest of them, they have a big screen, so they're good. Okay. I wonder if I can compromise. अभी आपको नजर आ रहा है? हाथ हिला के बताएं. Does that still work for her? Does it all fit? Yeah, she's good. Okay. All right, here's the rule, and it's very simple. और ये वो रूल है और ये बहुत सिंपल है. If these 6 letters अगर ये जो 6 लेटर्स हैं have a vowel in front, और इनके सामने एक वॉवल आ जाए, then they must not have a dogish leaning. तो इनके अंदर कभी भी दागिश लेने जो है वो नहीं आएगा. If there is not a vowel in front, then it must have a dogish leaning. लेकिन अगर इसके बरक्स इनके अंदर जो है वो दागिश ले Yeah. all right. Remember, the trigger is the vowel preceding the letter. That is, under the consonant in front of it, not its own vowel. So Dr. Vance, I messed up. We have to do it again. All right, well, you got the rule. You want to just translate that? तो रूल जो है वो ये है कि जब भी जो है वो दागिश जो है वो मौजूद, जब भी ये बगैर फकैत जो लेटर्स हैं इनके बाद जो है अगर कोई वाउल आ रहा है तो तब जो है इसके अंदर कभी भी दागिश लेने नहीं आएगा. लेकिन इसके बरक्स अगर इसके बाद जो है वो जो है दागिश लेने अगर बगैर फकैत लेटर्स के बाद जो है अगर वो वाउल मौजूद है तो फिर इसके अंदर जो है वो दागिश लेने आएगा. Okay, ready? Yeah. Okay, so I reworded it down here. और इसी बात को मैंने दोबारा जो है वो नीचे लिखा है. Remember, the trigger is the vowel preceding the begag fat letter, not the vowel accompanying the begag fat letter. और आप ये बात याद रखें कि जो वावल जो है उसके बाद आने की बात हो रही है. That is, if the consonant preceding the begag fat letter has a vowel, the begag fat letter must not have a dogish leaning. लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर बगैर फकैत जो लेटर्स हैं, जो 6 लेटर्स हैं, इनके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, कोई वावल नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर कभी भी जो है वो दागिश लेने नहीं होगा. If the preceding consonant does not have a vowel, the begag fat letter must have a dogish leaning. लेकिन अगर जो है कॉन्सोनेंट के बाद जो है वो वावल नहीं है तो जो बगैर फकैत लेटर्स हैं हमेशा उनके अंदर जो है वो दागिश लेने आएगा. So let's look at some examples. That'll hopefully make it clear. और जब ये जो बात हमने की है इसके मुतालिक हम कुछ जो है एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको काफी बेहतर समझ आ जाएगी. So I'm going to blow this up just so they can see it. मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि आप सबको नजर आए. And we're going to talk about it. Davar. ये जो लफ्ज आपके सामने लिखा है ये है दावार. And it's the Hebrew word for word. और ये दरअसल अब्रानी लफ्ज है लफ्ज के लिए. Okay. We have 2 begag fat letters in this word, a dalet and a bet. और आप ये देखें कि इस लफ्ज दीवार के अंदर 2 बगैर फकैत लेटर्स हैं. Now, the dalet is at the beginning of the word, and there's nothing in front of it. और आप ये देखें कि ये दालत है, इसके ये लफ्ज से शुरू होता है और आप देखें कि इससे पहले कोई भी जो है
वो जो लेटर मौजूद नहीं है. So there is no vowel in front of it, so it gets a dogish lene. तो रूल जो था अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर जो है बगैर फकैत लेटर से पहले कोई भी वॉवल मौजूद ना हो, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर बगैर फकैत लेटर से पहले कोई भी वॉवल मौजूद ना हो तो फिर जो है वो दागिश लेने आएगा. The bait, there is a vowel in front of it. It's this vowel that we look at. The vowel in front of the bait. Because there's a vowel here, there's no dagesh lene there. और अब आप देखें कि ये जो अगला लेटर है बेत, इससे पहले जो है वो वॉवल आ रहा है. आपको ये टी की तरह जो नजर आ रहा है ये वॉवल है और ये आ रहा है उससे बगैर फकैत लेटर बेत से पहले, इसलिए जो दागिश लेने हैं वो नहीं आएगा. So it's not this vowel that we look at. It's the fact that there's a vowel over here in front of it that eliminates the dagesh lene. और आप ये देखें कि हमने बाद वाला नहीं बल्कि हमने पहले उससे पहले देखना है कि वॉवल है कि नहीं. So let's look at another example. आए हम जो है एक और एग्जांपल देखें. Now I put another word in front of it, amaru, and it means they spoke a word. और अब जो है मैंने क्या किया कि मैंने, अगर आप दूसरा लफ्ज देखें तो वो दीवार ही है और दीवार से पहले मैंने एक लफ्ज लिखा है जो कि है अमूर, और इसका मतलब है बोलना. तो इस केस में देखें कि तब्दीली क्या हुई. So these two words are in the same clause. They're in the same phrase. और अब क्या है कि ये दोनों जो लफ्ज हैं ये एक ही जुमले का हिस्सा है. So now the fact that this ends in a vowel, we haven't learned this vowel yet, but this is an U vowel. The fact that this is in front of the dalet means there's no longer a dagesh lene there. और आप ये देखिए कि हमने ये जो वॉवल है अभी इसके बारे में नहीं जाना, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद है और ये बगैर फकैत जो एक लेटर है दालित इससे पहले मौजूद है. इसका मतलब जो है वो क्या हुआ कि अब जो है वो दागिश लेने नहीं आएगा. दोबारा मैं रूल रिपीट करता हूं कि बगैर फकैत लेटर्स के अंदर जब हम कोई लफ्ज उनको इस्तेमाल करते हुए जब कोई लफ्ज लिख रहे हैं तो अगर उन लेटर से पहले वॉवल आ रहा है तो फिर दागिश लेने नहीं लिखेंगे. So the fact that the vowels on the preceding word doesn't matter as long as the two words are in the same phrase. और अब अगर देखें कि आपको दो ये जो तकरीबन एक ही जुमले के दो लफ्ज हैं, लेकिन तब भी इसका जो इफेक्ट है वो हो रहा है कि जो है वो दागिश लेने नहीं लिख रहे. लेकिन उसके बरक्स जब हमने पीछे देखा था तो दीवार जब लिखा हुआ था तो पहले सिर्फ जब दीवार का लफ्ज लिखा था तो तब जो है उसके अंदर दागिश लेने लिखा था क्योंकि उससे पहले कोई भी वॉवल नहीं था. So the rule is simple. If there's a vowel, no dagesh lene. Vowel, no dagesh lene. बिल्कुल आसान रूल है. अगर वॉवल है तो दागिश लेने नहीं होगा, अगर वॉवल नहीं है तो दागिश लेने होगा. But now, same two words, but now there's a period ending this sentence. अब आप देखें कि ये दोनों ही लफ्ज लिखे हुए हैं लेकिन जो पहला लफ्ज है वो एक किसी और जुमले का हिस्सा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि वो उसके दरमियान जो है वो पीरियड लिखा हुआ है. क्योंकि जब भी जो है फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, जब भी कोई जुमला खत्म होता है तो आप फुल स्टॉप लिखते हैं. ठीक है, तो ये दो लफ्जों के दरमियान फुल स्टॉप लिखा हुआ है. So they're no longer in the same phrase. So now we
this dalet is not preceded by a vowel because we would pause here, and so it gets a dagesh lene. और अब देखें रूल के मुताबिक कि ये दोनों जो लफ्ज है ये एक जुमले का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप आ गया। इसका मतलब है कि एक जुमला जो है वो पीछे खत्म हो गया। तो तब जो है दीवार के अंदर आप देखें कि दोबारा वही रूल लग रहा है, क्योंकि जो दालत है इससे पहले कोई भी वॉवल नहीं है, और जब वॉवल नहीं होगा तो दागिश लेने आएगा। Oop, didn't mean to do that. Okay, so vowel in front, no dagesh lene. No vowel in front, dagesh lene. आप देखें बिल्कुल आसान है। एक चीज आप याद रखें, दूसरी उससे ऑपोजिट है। पहला क्या है कि अगर वॉवल होगा तो दागिश लेने नहीं आएगा। आप सिर्फ अगर ये याद रखेंगे कि अगर वॉवल होगा तो बगैर फकैत लेटर्स के अंदर दागिश लेने नहीं आएगा, लेकिन अगर वॉवल नहीं होगा तो बगैर फकैत लेटर्स के अंदर दागिश लेने आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ रूल जो है उन 6 लेटर्स के मुतालिक है जिनको हम बगैर फकैत कहते हैं। Okay, so that's the first type of dagesh. और ये जो था अभी हमने पहले देखा, इसको हम कर लेंगे, कहेंगे कि ये पहली किस्म का दागिश है। Remember, only in the begad kafat letters. दोबारा मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये रूल अप्लाई होता है बगैर फकैत लेटर्स के अंदर, जो कि 6 लेटर्स हैं और आपको वो आनी चाहिए। Now, the second type of dagesh is in Hebrew called dagesh chazak, or strong dagesh. और दूसरी तरह का जो दागिश है उसको हम जो है कहते हैं हिब्रू के अंदर दागिश खज़ाक, और इसको इंग्लिश में हम ये बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग दागिश। And the Latin term is forte, a dagesh forte. और इसके लिए जो Or strong. और इसके लिए जो लतीनी की जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फोर्टे है। फोर्टे लतीनी में स्ट्रॉन्ग को कहते हैं। This one is more important. और ये जो है ये ज्यादा जरूरी है। तो the forte is the same root for fortress? Yes, exactly. Yeah. तो देखिए फोर्ट्रेस जो होता है ना, किला जिसको कहते हैं, तो उसका मतलब मजबूत ही होता है, ये उसका रूट वर्ड है। So a dagesh forte doubles a letter. और जो दागिश फोर्टे है, जब भी वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वो दरअसल लेटर्स को डबल कर देता है। So instead of writing the consonant twice, they would write it once and put a dagesh in it. और होता ये है कि कॉन्सोनेंट को जब भी 2 मरतबा लिखना होता है इस रूल के मुताबिक, तो फिर इसको 2 मरतबा नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा कॉन्सोनेंट को लिखते हैं और उसके अंदर जो है वो दागिश लगा देते हैं या नुक्ता लगा देते हैं। So the dagesh forte here means that this is the equivalent of this, keet tail. और आप ये देखें ये दोनों एक ही लफ्ज है। अब ये लिखा हुआ है कि तेल, तो ये जो है इसको 2 मरतबा लिखा हुआ है जो है, और 2 मरतबा ना लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है वो दागिश जो है वो लगा देते हैं। And same thing here. Hash Shem, written with a dagesh, is the same thing as if I had written this. और इसी तरीके से हा शेम, और आप जब इसको 2 मरतबा लिखते हैं तो आप ये लिखें हश शेम लिखा हुआ है। Arabic has a similar sign in the sukun, the thing that doubles a letter. और जो अरबी है यही भी उसके अंदर भी यही वाला जो रूल है वो इस्तेमाल होता है। All right. Now, this is important. A dagesh forte can show up in any letter except the 5 gutturals, which I'm going to tell you about in just a second. और अब ये देखेंगे जब भी कोई लफ्ज लिख रहे होंगे तो जो दागिश फोटे है
वो किसी भी लेटर के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सिर्फ 5 लेटर्स ऐसे मौजूद हैं जिनको हम गटर के तौर पर जानते हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं होता। And a Dagesh forte will always have a vowel in front of it. Notice the here and the patak here. There's always a vowel in front of the Dagesh forte. और एक इसकी पहचान ये भी है कि जब दागिश फोर्टे है, इससे पहले हमेशा हमेशा जो है वो वावल मौजूद होता है। All right. A Dagesh forte, in fact, can show up in the Begad Kafat letters. और इसके एक और बात याद रखने की है कि जो दागिश फोर्टे है वो बगैत फकैत लेटर्स जो है उसके अंदर भी आ सकता है। So, if you have a dot in a letter that is not one of the Begad Kafats, it's a Dagesh forte, and that letter is double. और बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है एक बात का कि जब आप देखते हैं कि किसी भी जो लफ्ज के अंदर, किसी भी जो लेटर के अंदर जो है दागिश मौजूद है, तो आपको पता एकदम चल जाएगा कि ये दागिश फोर्टे है। वो क्यों? क्योंकि मैंने सब बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि बगैत फकैत लेटर्स के अलावा किसी भी लेटर के अंदर दागिश मौजूद है तो वो दागिश फोर्टे है। So, when you have a Begad Kafat letter with a Dagesh in it, you have to figure out, is that a Dagesh Lene and it's only hardening the letter? Or is it a Dagesh forte that is both hardening the letter and doubling? और अब जो है एक बात जो है वो थोड़ी मुश्किल है कि जब आप देखते हैं बगैत फकैत लेटर्स और उसके अंदर जो है वो दागिश मौजूद है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या ये दागिश फोर्टे है कि नहीं। Turns out the answer is pretty simple. Do you have a vowel in front? और आप एकदम दोबारा जो पीछे रूल जो हमने देखा है वहां पर जाएंगे। पहले रूल क्या था कि अगर वावल जो है वो मौजूद नहीं है तो जो है वो दागिश आएगा, अगर वावल मौजूद है तो दागिश नहीं आएगा। तो सेम रूल जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। Yeah, so if you have a vowel in front of it, it must be a Dagesh forte because you do not get a Dagesh Lene after a vowel. और आपको पता है कि अगर वावल मौजूद है और फिर भी दागिश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये दागिश फोर्टे है, क्योंकि हमें रूल का पता है कि जब भी वावल मौजूद होता है तो दागिश लेने नहीं लिखते। Now remember, this is only a problem with these 6 letters. A Dagesh in any other letter has to be a Dagesh forte and it has to be doubling the letter. और ये आप देखें कि ये जो हम मामला सीख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बगैत फकैत लेटर्स के लिए सीख रहे हैं। जो दूसरे लेटर्स हैं उसके लिए तो सीधी बात है कि वो जो है दागिश फोर्टे ही है, वो डबलिंग ही हो रही है। So I'm going to I want to practice that for a second. So I'm going to pull up my Bible so that we can just look and identify whether this is a Dagesh Lene or Dagesh forte. But I'm going to need a second to start up my software. So I'm going to stop sharing now. You can tell them all that. और जो है अभी जो मैंने आपको सिखाया है इसको हम बाइबल के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों रूल इस्तेमाल हुए हैं। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर जो है वैंस अपना दूसरी जो सॉफ्टवेयर उसको खोल रहे हैं, तो इतनी देर आप रिलैक्स कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। मुझे हाथ हिला के बताएं किन को इस बात की समझ आ गई है जो भी हमने पढ़ा। वेरी गुड। पिंडी में आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आई जो भी पढ़ा? आपने वैसे नहीं हाथ हिलाना, अगर नहीं समझ आई तो आपने नहीं हाथ पकड़। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल जो है उसके अंदर से इसको देखेंगे, ठीक है? तो फिर दोबारा अगर नहीं समझ आएगी तो we'll talk about it later. Okay? All right. Can everybody see that? Oh, I got to share it. No, sorry. Share.
All right, can everybody see this? क्या आप सब जो है ये सामने जो लिखा है आपको नजर आ रहा है? Do I need to You make have it to bigger? move. You have to move it little bit left. Is that better? Yeah, a little bit more. Yeah, good. Okay. I'm going to make it just a tad bigger. All right, everybody look at this first letter that I've highlighted. और ये आपके सामने पैदाइश की जो किताब है उसकी पहली वर्स लिखी हुई है। आपको जो लेटर जो है इसके अंदर हाईलाइट हुआ है वो नजर आ रहा है, तो अपना हाथ हिला के दिखाएं। It has a dagesh in it. और आप ये देखें इसके अंदर दागेश भी मौजूद है। We have to figure out, is that a dagesh lene or a dagesh forte? और हमें जो है फिगर आउट करना है कि ये दागेश लेने हैं कि दागेश फोटे हैं। और आपको ये पता है कि ये उन 6 लेटर्स के अंदर मौजूद है जिनको हम बगैत फकैत कहते हैं। Oh, you jumped ahead of me there. Yes, so the first question is that a begat to fat letter? और सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये बगैत कफैत लेटर है कि नहीं। And the answer is yes, it's the letter bait. और आपका आंसर जो है वो यस है, क्योंकि अभी हमने जाना कि 6 लेटर्स में से जो है ये पहला लेटर है। And therefore is subject to a dagesh lene. और अगर ये बगैर फकैत लेटर है तो इसके अंदर जो है वो दागेश लेने होना चाहिए। All right, so our rule is pretty simple. If you have a dagesh inside a begat to fat letter, you look to see if there's a vowel in front of it. Well, there's not even a letter in front of it. So there is no vowel in front of it, and that has to be a dagesh lene. और आपको पता है अभी हमने रूल सीखा है कि जब भी बगैर फकैत लेटर्स को हम बाइबल के अंदर या कहीं भी देखेंगे तो उसके अंदर अगर उनसे पहले वावल नहीं लिखा हुआ तो तब ये हमेशा दागेश लेने होगा। All right, let's look at this one, the bait. और दोबारा हम आगे देखते हैं, बेत लिखा हुआ है। Same rule. I look at the letter in front. I have a tub that has no vowel. और हम देखते हैं कि बेत के सामने जो है ताव है या उससे पहले जो है वो ताव है, और हम ये देखते हैं कि इसमें कोई भी वावल नहीं है, तो दोबारा क्या रूल इस्तेमाल हो रहा है। So the dog, there's no vowel in front of it, so that dagesh must be a dagesh lene. तो अगर वावल नहीं है तो फिर बगैर फकैत लेटर्स के अंदर ये दागेश लेने होगा। So it's not doubling the bait, it's just making it hard. So you're going to pronounce it but. और आप ये देखें कि ये डबल नहीं कर रहा। जब दागेश लेने होता है तो वो डबल नहीं करता, लेकिन जो इसका जो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी आवाज है उसको थोड़ा सा सख्त करता है। Now let's look at this one. और अब हम आगे बढ़कर देखते हैं एक और लफ्ज के अंदर आपको दागेश नजर आ रहा है। We have a dagesh in the shin, आप देखिए शिन के अंदर दागेश मौजूद है, and the shin is not a begat to fat letter. और जो शिन है हम सबको पता है कि वो बगैर फकैत लेटर नहीं है। So therefore that dagesh has to be a dagesh lene, and it is doubling the shin. Okay, so this should be dagesh lene or forte? I meant to say forte. What did I say? Lene. I made a mistake. There's no, this is not a begat to fat letter, so it has to have a dagesh forte. I mean, that is a dagesh forte, and it's doubling the letter. My mistake. Sorry. बिल्कुल सीधा ये रूल है और आपको ये नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने देखना है कि वो लेटर की किस्म कौन सी है। तो ये जो है ये लेटर की किस्म जो है ये बगैर फकैत नहीं है, ये वो 6 लेटर्स नहीं है। शिन जो है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जो शिन है वो 2 मर्तबा लिखा हुआ है। And notice it has a vowel in front of it. और आप ये भी देखेंगे इसके सामने जो है वो वॉल भी लिखा हुआ है। So this would be pronounced hash sha mayim. इसको हम जो प्रोनाउंस है वो इस तरीके के पहले करेंगे, पहले होगा
हाश शमाइम, because there's two shins. 2 दफा जो है वो शीन होगा, जिसका मतलब होता है आसमान या हेवंस। All right, look at this one. और आगे हम बढ़ के ये जो लफ्ज है ये देखते हैं, We have a dagesh in this pay. और हम देखते हैं कि पे के अंदर जो है वो दागिश मौजूद है। So our first question is the pay a bagad kafat letter? और सबसे पहले हमने देखना है कि जिस लेटर के अंदर दागिश मौजूद है क्या वो बगैत फकैत है कि नहीं, और इस केस के अंदर आप बताएं कि जो पे है वो बगैत फकैत है कि नहीं। And it is a bagad kafat letter. और आप सबने ठीक कहा कि हाँ ये बगैत फकैत लेटर ही है। So we have to decide, is that a dagesh lene or a dagesh porte? और हमने ये देखना है कि क्या ये दागिश लेने हैं या दागिश पोटे। The rule's simple. Is there a vowel in front? दोबारा एक दफा फिर आप सोचें कि क्या इस बगैत फकैत लेटर से पहले वावल मौजूद है कि नहीं, और आप बताएं वावल मौजूद है कि नहीं। There is no vowel under the lamed, so therefore this has to be a dagesh lene. और आप हमने देखा कि लामिद के नीचे कोई भी जो है वो वावल नहीं है, तो एक का मतलब है कि ये दागिश लेने है। So it is only hardening the letter. और ये सिर्फ और सिर्फ इस लेटर को ज्यादा सख्त जो है उसकी आवाज निकाल। So all pane. और ये है all, पहला जो लफ्ज है ये है एन और एल, all, और पने। Yeah. Pane is like a face. Yes. Yeah. Now, same situation here. I won't do it, but look at this one. और उससे नीचे भी जो पने लिखा हुआ है वो भी ऐसे ही है, लेकिन मैं उससे आगे जो लफ्ज है वो आपको दिखा रहा हूँ। Now, I want you to ask them to tell me, is that mem a bagad kafat letter or not? और यहाँ पर जो है मेम के अंदर हम देखते हैं कि दागिश मौजूद है। आप बताएं, अपना माइक खोल लें, बल्कि मैं खोल सकता हूँ कि ये जो मेम है वो बगैत फकैत लेटर है कि नहीं है। Tell me. No, it is not. It is not. It is not a bagad kafat letter. That is correct. Tika. और ये ठीक है कि ये बगैत फकैत लेटर जो है वो नहीं है। So therefore, what type of dagesh must that be? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दागिश है वो किस किस्म का है। It's a forte. Correct. तो अगर ये बगैत फकैत लेटर नहीं है और इसके अंदर दागिश लिखा हुआ है तो ये सीधे सीधा जो है वो दागिश फोर्टे है। So there are two mems here. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो मेम जो है 2 मर्तबा लिखा हुआ है। So this word is ham mayim. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेम है ये 2 मर्तबा है, तो इसको पढ़ेंगे हम माइम। तो माइम पानी को कहते हैं, जैसे बच्चों को भी नहीं कहते माइम, तो हा माइम। Let's look at one more. Look at this letter here. Is the yod a bagad fat letter or not? और अभी हम देखते हैं जो कि हाईलाइट हुआ है। अभी सिर्फ मैं पिंडी से पूछूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको माइक खोल दिया। यहाँ पर आप देखिए कि योद है, इसके अंदर जो है वो दागिश लिखा हुआ है। आप ये बताएं कि ये क्या है। नहीं है बगैत का फैट। So they are saying it is not a bagat fakat letter. And that is correct. और आपने बिल्कुल ठीक कहा। So therefore, what type of dagesh is that dagesh in there? और आप ही बताएं तो फिर ये किस तरह का दागिश है। अगर ये बगैत फकैत नहीं है तो ये किस तरह का दागिश है। दागेश फोर्टे। Correct. Very good. दागिश फोर्टे। So there are two yods here. और आप ये देखें तो यहाँ पर 2 योद मौजूद है। Now,
there's actually two vowels here. There's a vowel under the vav, and there's a vowel under the yod. और अगर आप देखिए तो यहाँ पर दो वॉवल्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले जो है वाव के नीचे एक वावल मौजूद है और उसके बाद योद के नीचे जो है एक वावल मौजूद है. So I'm just trying to make it clear. It's not. But there's actually a space there. So because there's two yods, this is pronounced vai ya. और यहाँ पर जो है ये दो जो इसके दरमियान अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो नीचे जो लाइन लगी हुई है इसके दरमियान स्पेस मौजूद है. आप लोगों को स्पेस नजर आ रही है? तो अगर वो ये जो लिखा हुआ है ये है वाई या. So V-A-Y-Y-A-R. vai yar. तो ये है वाई या. Now let's look at this one. आए हम आगे बढ़ते हैं और ये एक और लफ्ज को देखते हैं. We have the same situation with the yod here. और आप ये देखें कि सेम सिचुएशन है और योद जो है उसके अंदर दागेश मौजूद है. So that yod, that dagesh has to be a dagesh forte. अब हम ये देखते हैं कि ये बागैर सकेत लेटर्स नहीं है तो ये जो दागेश है ये दागेश फोर्टे है. So vai yav. तो ये होगा वाई याव. But now we have a bagat to fat letter. लेकिन आप देखें कि इसी एक लफ्ज के अंदर बगैर सकेत लेटर मौजूद है और उससे With a dagesh. और जिसके अंदर जो है वो दागेश मौजूद है. So is that a dagesh forte or a dagesh lene? और आप ये देखकर बताएं कि लाहौर से जो लाहौर मेन ऑफिस है तो आप ये उसमें से कोई बताएं कि ये दागेश लेने हैं कि दागेश फोर्टे है. मैंने आपकी अनम्यूट किया है माइक. What did you just do? I'm just asking a center like in Lahore. आप ये बताएं कि ये दागेश फोर्टे है कि दागेश लेने हैं. They They don't. are still unmuted. They are still unmuted. Yeah. Well, they also don't have enough information to answer that question yet. Jim. Okay. All right. आप कोई ये बताएं. All right, good. The sign here, you see these two dots? अगर आप ये देखें कि ये जो साइन है Is a sign. I'm sorry, cut you off. Go ahead. sorry, जो साइन आप देख रहे हैं बैच से पहले ये जो है आप देखते हैं कि ये एक साइन मौजूद है कि दो जो है वो नुक्ते लगे हुए हैं. This sign indicates the absence of a vowel. There's no vowel here. और जब भी आप ये साइन देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर कोई भी वावल मौजूद नहीं. And so therefore, there's no vowel in front of this dagesh, and it must be a dagesh lene. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये साइन हम देखते हैं कि जिसके अंदर जो है जो ये बताता है कि यहाँ पर कोई भी वावल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि एकदम जो पहला रूल जो हमने पढ़ा है वो इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो है एक बगैर सकेत लेटर है उससे पहले कोई भी वावल मौजूद नहीं है तो फिर इसके अंदर जो दागिश है वो दागिश लेने. So this word has 1, 2, 3 vowels. इसका मतलब है कि ये एक लफ्ज है जिसके अंदर 3 वावल मौजूद. And so if it has 3 vowels, it has 3 syllables. और अगर ये 3 इसके अंदर वावल्स हैं जितने भी वावल्स हैं उतने इसके अंदर सिलेबल होते हैं यानी कि इतने ही हिस्सों में इसको बोला जाएगा. So this would be pronounced vai, yav, del. तो इसको हम पढ़ेंगे वाई याव दिल. All right. I'm going to go back to this now. और आपको ये मिसालें जो हमने बाइबल में देखी जो जेनेसिस की किताब के अंदर थी इसमें से काफी समझ आया होगा. दोबारा जो है हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं. Now, I mentioned that every letter can get a dagesh forte except for the 5 gutturals.
it's time to talk about the gutturals. आपको अभी हमने ये सीखा है कि हर एक जो लेटर है उसके अंदर जो है वो दागिश फोटे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम जो है गटलर बोलते हैं, उसके अंदर ये रूल इस्तेमाल नहीं होता। And the 5 gutturals are Aleph, Hey, Chet, Ayin, and sometimes Resh. और ये जो 5 गटलर हैं ये है अलिफ, हे, हेत, आइन और कुछ केसेस के अंदर रेश। Now, we call them gutturals because these are pronounced in the throat. And the Latin word for throat is gutter. So it's the throaty letters. और इसको हम गटलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको अपने गले में बोलते हैं, और लैटिन के अंदर जो गला है उसको गुटर कहते हैं। So you'll never get a dagesh forte in these letters. So, okay, you don't get a dagesh lady in there. और आप जो है इन गटलर्स के अंदर कभी भी दागिश फोटे जो है वो नहीं देखेंगे। So we talk about these 5 letters as a group because they have 3 major peculiarities or special characteristics. और हमने इन 5 लेटर्स को जो है जिसको हम गटलर पे जानते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि इनकी जो है 3 खासियतें हैं। So, number 1, 2.31. The first peculiarity is gutturals do not take a dagesh forte. पहली सबसे पहले जो खासियत जो है वो ये है कि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब भी आप ये 5 लेटर देखेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो दागिश फोटे नहीं लिखा हुआ। Now, because they don't take a dagesh forte, stuff happens. और अगर ये दागिश फोटे इनके अंदर नहीं लिखा जाता तो फिर कुछ होता है। In Hebrew and in Aramaic, a letter is doubled for a reason. जो अरामी और अब्रानी जुबान है, इसके अंदर जब भी किसी लेटर को डबल किया जाता है जिसके लिए हम दागिश फोटे इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक वजह होती है। And it's important that we recognize the doubling. और ये बहुत जरूरी है कि हमें फौरन पता चले कि ये डबल है कि नहीं है। Consequently, when a guttural does not double because it cannot take dagesh forte, one of 2 things happens. और हमने अभी देखा कि जब भी गटलर है इसके अंदर दागिश फोटे नहीं आता तो 2 चीजें जो है इस केस के अंदर होती हैं। If the guttural is an aleph, ayin, or resh, when it rejects the dagesh forte, the preceding vowel is lengthened. जो रूल क्या बन रहा है यहाँ पर कि जब भी आइन, अलिफ और रेश के अंदर जो है जो दागिश फोटे जब नहीं लिखा जा रहा तो इससे पहले जो वावल इस्तेमाल होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो लंबा पढ़ते हैं। The lengthening of the vowel is to compensate for the non-doubled letter. और इसको लंबा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब भी जो वावल जो है वो अगर जब भी जो ये जो हिंसा है वो डबल नहीं हो रहा तो उसको जो है कंपनसेट करने के लिए हम जो वावल है उसको लंबा पढ़ देते हैं। So we call that compensatory lengthening. Just an adjective from compensate. और इसको हम कहते हैं compensatory lightening, so lengthening. The other thing that happens is if you have one of the 2 H consonants, the hey or the chet, then
you do not get the Dagesh forte, but it acts like it's double. और दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम देखते हैं एच और हेड के केस में जिसकी आवाज जो है वो एच की तरह की है, And we call this virtual doubling. और इसको जो है हम वर्चुअल डबलिंग कहते हैं. So if there's a short vowel in front of these two letters and it needs to be doubled, the vowel will just stay short. और आप ये जब दो जो देखेंगे लेटर्स, इसके अंदर इससे पहले अगर कोई वावल आ रहा है तो आप हमेशा जो है इसको शॉर्ट करेंगे और इसको जो है हम वर्चुअल डबलिंग कहते हैं. Whereas before the aleph, ayin, and resh, the vowel would have been lengthened. लेकिन इसके बरक्स जब हम अलिफ, आइन और रेश देखते हैं तो जो वावल इनसे पहले आता है वो जो है उसको जो है लंबा किया जाता है, लेकिन जो है और हे के केस में जो वावल है उसको छोटा किया जाता है. So, first peculiarity, gutturals don't take a Dagesh forte. सबसे पहली जो बात है कि जो जितने भी गटरर्स हैं उनके अंदर कभी भी दागेश फोर्टे नहीं इस्तेमाल होगा. Second peculiarity of gutturals, और दूसरी जो है हम खासियत जो है गटरर्स की देखते हैं, they prefer A-class vowels. और वो ये है कि वो हमेशा जो है चाहते हैं कि उनसे पहले जो है या उनके साथ ए क्लास का जो वॉवल्स हैं वो इस्तेमाल हो. So, you tend to see A vowels in front of or with gutturals. और हमेशा जो है जो गटलर्स जो है उनसे पहले जो है हम ए क्लास जो वॉवल्स हैं वो लिखते हैं. Now, this is not absolute, but as a rule, that's what's going to happen. और ये बिल्कुल हर दफा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि काफी मर्तबा ऐसा होता है. And just to give you an example, when we do the verb, there are two ways of doing the verb. One with an O vowel and one with the A vowel. जब हम verbs को सीखेंगे तो देखेंगे कि हम दो तरीके से जो है वो फेल या वर्ब को सीखेंगे. या तो हम ए क्लास के साथ जो ए क्लास के जो वॉवल्स हैं उनके साथ, या जो है ओ क्लास के वॉवल्स उनके साथ सीखेंगे. And if your root has gutturals, it's going to use the A class verb form. और आप ये देखें कि अगर रूट जो है जब हम फेल सीख रहे होंगे ग्रामर के अंदर तो उसके अंदर जो रूट जो है अगर गटर होगी तो हम हमेशा ए क्लास वावल इस्तेमाल करें. And so just remember, gutturals prefer A class vowels. आप बस अभी ये याद रखें कि जितने भी गटर्स हैं वो ए क्लास वावल्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. जब आप आगे जाके ग्रामर को सीखेंगे तो आपको ये रूल एकदम जो है पता लग जाएगा कि हमने ये सीखा हुआ. And the third peculiarity, 2.3.3, is that gutturals, except resh, prefer compound schwas. और जो तीसरी खासियत ये है कि जो गटर्स हैं रेश के अलावा सब के सब जो है वो कंपाउंड जो शिवा है उसको पसंद करते हैं. Let me explain what that means. I couldn't hear you. What did you say? Let me explain what that means. Okay. और मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी मैंने कहा उसका मतलब क्या है. You'll remember that the vowels in Hebrew and Aramaic had three lengths: long, short, very short. अब सबको याद है कि हमने ये सीखा है कि जो वॉवल्स हैं हिब्रू के अंदर या अराबी के अंदर वो तीन तरह के हैं, लंबे, छोटे और बहुत छोटे. And the very short ones we call schwas. और जो बहुत छोटे हैं उनको हम शुवा कहते हैं. The only schwas we've covered so far are the ones with a short vowel with the two dots. And I told you the two dots was the sign of being very short. और अभी तक जो हमने देखे हैं वो हमने देखे हैं कि टू डॉट्स वाले, और टू डॉट्स जब भी हम लगाते हैं तो इसका मतलब जो है जो वॉल्स है वो बहुत ज्यादा छोटा है. It turns out there's also those two dots can show up by themselves.
और हमने ये देखा अभी जब हम बाइबल पढ़ रहे थे कि ये जो दो डॉट्स हैं ये वैसे भी आ जाते हैं. We saw that when we were practicing the Dagesh Lene Forte a minute ago. और अभी हमने जो है पैदाइश की किताब के अंदर ये दो जो शुआ है या दो नुक्ते जो है हमने देखे. When we had this sign right here. और जब हमारे सामने पास ये जो साइन जो था ये आपने देखा. Now, this sign, no, let me rephrase. As a rule, gutturals don't like to use this sign, the simple schwa. They want to use one of the compound schwas. और अब आप देखें रूल क्या है. रूल ये है कि जितने भी गटलर्स हैं रैश के अलावा वो ये जो साइन जो है अभी हमने देखा जिसको शुआ कहते हैं दो नुक्ते जो है उसको पसंद नहीं करते. पसंद करने का मतलब है कि वो नहीं चाहते जब भी गटलर आ रहा हो तो उसके साथ ये शुआ आए. वो हमेशा चाहते हैं कि कंपाउंड शुआ जो है वो लिखी जाए. कंपाउंड का मतलब ये है कि जैसे ही आपके सामने जो है आप देख रहे हैं कि दो वॉवल्स को जो है जैसे मिला के लिखा हुआ है. We call them compound because they are a compound of the short vowel with the schwa sign. और ये जो है वो कंपाउंड इसलिए है क्योंकि एक तो ये शॉर्ट वॉवल है और दूसरा इसके साथ श्वा लिखी हुई है इसलिए हम इसको कंपाउंड श्वा कहते हैं. So when the sign is just the two dots, we call it a simple schwa. और जब भी ये जो साइन जो है टू डॉट्स हैं तो इसको हम ये क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं सिंपल श्वा. And I'm going to tell you about the simple schwa in a minute. और जो सिंपल श्वा है इसके मुतालिक हम मजीद सीखेंगे. Now, combining this characteristic that gutturals prefer compound schwas with the characteristic right in front of it, they prefer A-class vowels, then it follows that most of the time, if the language calls for the guttural to have a schwa, it's going to be this schwa. और जब हम देखते हैं कि इसको जब हम इकट्ठा करके जब हम रूल को देख रहे हैं. Okay, I'm sorry, I forgot. You got to repeat it. Okay, can you see this sentence? No, you have to repeat. Sorry, that's not you said. Okay, so gutturals prefer compound schwa. जो गटलर जितने भी हैं वो कंपाउंड जो श्वा है उसको चाहते हैं कि वो उनके साथ लिखी जाए. Gutturals prefer A-class vowels. और दूसरा हमने ये देखा रूल ऊपर कि जो गटलर जो है वो हमेशा ए क्लास वॉल जो है उसको पसंद करते हैं कि वो उनके साथ लिखे जाए. Therefore, gutturals will, as a rule, prefer the A-class compound schwa. इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल बनता है वो ये है जो गटलर्स हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं. वो पसंद कर रहे हैं कि उनके साथ लिखा जाए ए क्लास कंपाउंड श्वा. The letter resh does not share this peculiarity. It can take a simple schwa. और जो रेश जो लेटर है वो इस खासियत के नहीं जो इस्तेमाल करता. वो सिर्फ और सिर्फ जो है सिंपल जो श्वा है वो पसंद करता है कि उसके साथ लिखी जाए. Now, just to review for a second, और आए हम इसको जो है दोबारा जो जेनेसिस जो है पैदाइश जो है उसके अंदर देखते हैं कि कहाँ पे ये ऐसा रूल मौजूद है. we have an aleph here, and the schwa is a compound schwa. और आप देखते हैं कि अलिफ लिखा हुआ है और इसके साथ जो है वो कंपाउंड श्वा लिखी है. Now, it happens to be the I-class one, but that's okay. It's a compound schwa. It's following our preferences. और ये जो है ये कंपाउंड श्वा है और ये हमें ये प्रेफरेंस करती है कि इसको कंपाउंड श्वा लिखा जाए. This is the word for God, Elohim, and it all begins with this compound schwa. और आप ये देखते हैं जो लफ्ज लिखा हुआ है ये है एलोहीम और ये हमेशा जो है ये कंपाउंड श्वा इसके अंदर आती है. Now I want to illustrate the other point. See this hey with a patak under this ha with the dagesh in the next letter?
आप ये देखें, ये जो लफ्ज है जिसके अंदर हे है और नीचे पताक है और आगे जो है मिम के अंदर दागिश है, That is the definite article in Hebrew. इसको हम अब्रानी के अंदर डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है जैसे इंग्लिश के अंदर द है ना, तो ये एक खास जो है वो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। And it's a hey, a patak, and a dagesh forte in the next letter. और ये हे और पताक है और इसके आगे जो है दागिश फोर्टे है। But down here, the next letter is an aleph. लेकिन आप ये देखें कि नीचे एक लफ्ज लिखा हुआ है जिसके अंदर हे लिखा है और उसके बाद जो लफ्ज आ रहा है वो अलिफ है। And you remember the first peculiarity of gutturals is they reject a dagesh forte. और सबसे पहले हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि जो अलफ है वो गटलर है और गटलर के अंदर कभी भी जो है वो दागिश फोर्टे नहीं आता। So you'll notice there's no dagesh forte here. आपको यहाँ पर भी दागिश फोर्टे नजर नहीं आ रहा। And to compensate for the lack of the dagesh forte, the preceding vowel was lengthened. और इसको जो है कॉम्पनसेट करने के लिए जैसे हमने एक रूल पढ़ा है, इससे पहले जो वॉवल होगा उसको हम लंबा पढ़ेंगे। The patak is a short A and the kamatz is a long A. और अब ये देखें कि जो पताक है वो हमें पता है कि छोटा ए है। छोटा ए का मतलब है कि ये छोटी ए की आवाज निकालता है और कमात जो है ये लंबी जो ए की आवाज निकालता है। Let's see if I have some other examples. I do not. So we'll not right off the top of my head. So let's go back to this. So gutturals, 3 peculiarities. They do not want. They don't take a dagesh forte. They prefer an A-class vowel, and they prefer compound vowels. और हमने 3 इसकी खासियत देखी कि कभी भी ये दागिश फोर्टे नहीं लेते। ये प्रेफर करते हैं कि ए क्लास वॉवल्स इस्तेमाल किए जाए, जैसे हमने पताक और कमात से देखा वो ए क्लास वॉवल्स थे। और जो तीसरी उसकी खासियत है वो ये है कि वो कंपाउंड जो श्वा है उसको पसंद करते हैं। Now, am I expecting you to learn all this week? और मैं चाहता हूं कि आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं इस वीक आने चाहिए। No. ऐसा मुमकिन नहीं है। We will learn it by exposure. हम इसको देखेंगे जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम इसके अंदर वो रूल्स देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा जानें और जब भी हम बाइबल के अंदर देखेंगे ये इस तरह मौजूद क्यों है, तो एकदम आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वो रूल है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। So I will be continually referring back to this chapter over these rules until you get these rules in your head. और आपको जो है मैं कंटिन्यूअस ये तमाम के तमाम जो रूल है वो याद दिलाता रहूंगा और एक वक्त आएगा कि आपको ये आते होंगे। Right. Reviewing the vowels. और आखिर में जो है मैं जो वॉवल्स जो हैं जो हमने सीखे उनको रिव्यू करता हूँ आपके साथ। This is just what we had last week. There's a very short vowel, the short vowel, the long vowel. और पिछले ही वीक हमने जैसे पढ़ा था दोबारा यही है कि लंबे वॉल, छोटे वॉल और बहुत छोटे वॉल। And you'll remember that in the high class, we also developed these E variants. और इसके बाद हमने ये ई जो है वो आई क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि इसके आगे शाखें मौजूद है जिसको हम ई वेरिएंट्स के नाम से जानते हैं। And same thing in the U class where we developed O variants. और इसके बाद जो यू क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमने इसकी जो मजीद इसकी जो जाना था कि इसके अंदर जो है वो ओ की जो है वो वेरिएंट्स मौजूद। Now, we covered all this the last 3 weeks. और ये जो कुछ हम देख रहे हैं आज अभी ये हमने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी तफसील से देखा है।
this last little point I make. The vowel signs for the kamats, the hirik, and the kibbutz, that is, boy, that doesn't want to scroll. The kamats, the hirik, and the kibbutz, those signs represent vowels that are both short and long. और जो आखिरी पॉइंट जो है, जो सबसे पहले हमने देखा है टी की तरह का, उसको कमात्स कहते हैं, और उसके बाद जो है हमने देखा है जो एक नुक्ता देखा है उसको हिरिक कहते हैं, और उसके बाद हमने जो 3 नुक्ते देखे हैं उसको कबूत्स कहते हैं। ये सब के सब जो है ये जो है ये यहाँ तो बहुत छोटे हैं और यहाँ बहुत लंबे इनकी आवाज होती है। And it turns out there are ways, I'm going to give you some rules that will help you know when it's long or short. और हम जो है कुछ रूल्स देखेंगे कि कब ये लंबे हैं और कब ये छोटे हैं। All right, the last thing I want to talk about today और आखिरी 4-5 मिनटों के अंदर आप ये जो चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ is this simple schwa that we talked about a second ago. जिसको अभी हमने बाइबल के अंदर से देखा कि सिंपल श्वा जो है वो भी मौजूद है। First of all, what is a schwa? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि श्वा जो है वो क्या है। Every language has this vowel, and it's just your mouth in its most relaxed position, and you make a sound, and it's और ये जो है ये हर एक जुबान के अंदर जब आप बोल रहे होते हैं तो कई दफा आता है कि आपका जो मुंह जो है वो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होता है और आप आह की आवाज निकालते हैं। हिब्रू में इसका नाम जो है वो शिवा है। Now, we have this sound in English. It shows up in the first letters of these 3 words: afar, equipment, occult. और हमारे पास ये जो आवाज है ये इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है, जैसे हम ये 3 लफ्ज देखते हैं अफार, इक्विप और अकल। And in fact, it's the first sound and the last sound in the word America. America. यही वाला जो साउंड है जब हम अमेरिका पढ़ते हैं तो अ और आखिर में भी अ की आवाज है अमेरिका। तो ये जो साउंड है ये शुआ से जाहिर होता है अबरानी के अंदर। And in fact, the word schwa is actually a Hebrew word. It's this word right here, schwa. तो जो शुआ है ये एक अबरानी लफ्ज है। And the vowel sign is just the 2 dots above each other. और जो उसके अंदर जो वॉल साइन है वो सिर्फ इसको लिखते कैसे हैं कि 2 जो डॉट्स हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। And it's just the sound. So in this word, devar. तो ये का साउंड है और जैसे ये लफ्ज जो लिखा हुआ है जिसका जिसको हम पढ़ते हैं दवार, जिसका मतलब जो है वो लफ्ज है, जैसे हम लफ्ज जो पढ़ते हैं ना अबरानी में उसको दवार कहते हैं। And you want to say it rapidly. It's devar. और इसको जब और जब हम इसको पढ़ते हैं तो जल्दी से पढ़ते हैं दवार। All right. Now, it's a vowel, but it's just spoken quickly. और ये वॉल है और ये सिर्फ उसके अंदर जो है इसके दरमियान ही बोला जाता है। So we have this vowel sign and then the 3 compound signs that we talked about earlier. और फिर हमने देखा शुआ जो है उसके साथ जो है हमने बात की कि 3 कंपाउंड साइंस के मुताबिक। So all 4 of these are called schwas. और आप ये देखें ये तमाम जो है इनको हम शुआ के तौर पर जानते हैं। We just call this compound schwas. और सिर्फ इसका जो नाम है वो कंपाउंड शुआ है। Now, this is where things get interesting. That same simple schwa is also used to indicate the absence of a vowel. और आप ये देखें कि जब भी सिंपल शुआ लिखी होगी तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी वावल नहीं। So, for example, in this word Yisrael, that schwa is what we call silent. And there's actually only 3 vowels here.
It's Yisrael. और जो अब्रानी के अंदर जो है वो इसराइल को पढ़ते हैं यस्राएल। तो इसके अंदर जो शीन के नीचे जो शुआ नजर आ रही है वो सिर्फ साइलेंट। So the question then is, when do I know when it's silent and when do I know it is vocal? और अब सवाल ये पैदा होता है कि कब ये साइलेंट है और कब ये साइलेंट नहीं है। जब साइलेंट नहीं होगी बोलते हैं वोकल शुआ। Well, I'm going to cover that next week. तो ये हम अगले वीक जो है इसको देखेंगे। Now, you have a quiz next week. और आपको पता है कि आपका दोबारा अगले वीक एक क्विज है। Notice we didn't talk about Greek at all today. और आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो है ये जो सामने नजर आ रहा है इसके मुतालिक बात नहीं की। We will next week. But your quiz is, I want you to write out the entire Hebrew Aramaic alphabet. क्विज जो है वो सिर्फ मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जो है अल्फाबेट्स सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हैं वो आपने लिखने हैं, अबरानी के अंदर भी और अरामी के अंदर। But as you're practicing it, let's do a couple things. You don't need to write bait twice. You don't need to do it with the dogation without. Just write it without the dogation. और जब आप इसको लिखेंगे तो आपने ये देख रहे हैं कि जो दागिश और दागिश के बगैर है, तो आपने जो है सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा लिखना है और वो दागिश के बगैर लिखना है। So just write Aleph, Beit, Gimel, Dalet. तो अब हमने सिर्फ अलिफ, बेत, गिमल, दालेत। And if your letter has a final form, you don't need to write the final form. Just do this one. और जब आप ये देख रहे हैं काफ के केस में, तो इसके अंदर काफ सफीद भी लिखे हुए हैं, फाइनल फॉर्म भी लिखी है, तो आपने वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दागिश के बगैर जो काफ है वो लिखना है। It's important that you learn the alphabet. ये बहुत जरूरी है कि अगले हफ्ते तक आप सबको अल्फाबेट्स आने चाहिए। And you need to learn it in order. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी तरतीब क्या है। आपने तरतीब के बगैर नहीं इनको सीखना। Because if nothing else, that's the way the words are listed in the dictionary. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब कभी भी ये डिक्शनरी में लिखे जाते हैं तो ये तरतीब से लिखे जाते हैं। So this week, practice writing the alphabet and reread this material a couple times. I know you have other classes, but try to read the material of this chapter again, and we will finish this chapter next week. और आपको पता है कि आपके पास, मुझे पता है कि आपके पास काफी दूसरी जिम्मेदारियां हैं, आपके पास दूसरी क्लासें भी हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें जो दूसरा चैप्टर अभी हमने पढ़ा है उसको सिर्फ एक दफा पढ़ें और देखें कि इसके अंदर क्या क्या हमने सीखा।